Hello, my dear students. Welcome back to your channel, Brilliant Minds by Neeru. Students, I have brought this video for CUT appearing students in 2022. I have already published two more practice test 1 and practice test 2. I'm sure you must have watched those two also. And I'm also publishing videos on GK and current affairs. Please do not miss to watch those videos. Okay. So let us start with this quiz in practice test 3. This is for IP and computer science students. First of all, you will be given few instructions. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स के how you are going to appear for CBT mode. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप कैसे अपेयर होंगे उसके कैसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी बटन्स वगैरह या सिंबल्स के बारे में बताया था. डू वॉच दैट ऑल्सो. अब अपने क्विज की बात कर रही हूँ. इट कंटेन्स 15 क्वेश्चंस. Each question has 4 options, out of which only one is correct. You have to finish the test in 20 minutes. You will be awarded 5 marks for each correct answer and there will be 1 negative marking. -1 होगा स्टूडेंट्स अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग है तो. ओके अगर आपने जब आप उसके लिए सीबीटी के लिए अपेयर होंगे सीयूईटी के लिए देन ऑल्सो आपको डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा. आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड हैव अंडरस्टूड देम. आई अग्री नॉट टू चीट और यूज अनफेयर मीन्स इन दिस एग्जामिनेशन एंड सो ऑन. जितना भी होगा आपको यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है आप टिक करेंगे देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन. In Python code on encountering a syntax error, the dash does not execute the program. कौन execute नहीं करता है? Interpreter, editor, processor और converter. Yes, students, which one you want to try? Do you think this one, processor? Oh, no. Editor? Again wrong. Is it interpreter? You are correct. Interpreter is the करेक्ट आंसर. अपने आप को 5 मार्क्स दे दीजिए स्टूडेंट्स. अकाउंट की आपकी ओपनिंग हो गई है. कांग्रेट्स. सो लेट अस मूव टू द क्विज. क्वेश्चन नंबर. Which method is used to remove or delete a file? Flush, fname, delete or remove? Okay, do you want to start with this one? Delete? No. Now do you want to flush? Again wrong. Is it remove? Remove is the correct answer. Okay, 5 marks again if your answer is correct. Now let's move to question number 3. Dash symbol is used to see every column of a table. This is related to students MySQL /_ and the last option is exclamation symbol. This is used to see every column of a table. आपको हर कॉलम को देखना है, व्यू करना है. Then yes, which one you want to try? / wrong. You want to try this one? Asterisk? Correct. Asterisk is the correct option. आपको जब सारे कॉलम व्यू करने हैं, you give star. Select star from and you give the table name. Okay. Let's continue the quiz and give yourself 5 marks more. Number 4. Which method of a list can be used to implement a stack in Python? Since I've already told you कि आपका कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का भी है तो there must be some few questions की जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होंगे. Okay, which method of a list can be used to implement a stack in Python? Push and pop, append and pop, insert and delete, push and delete. Okay, this one, 4th one, wrong. Insert and delete, again wrong. Append and pop, correct. You are correct. अगर आपने ये ऑप्शन नहीं सोचा था तो ऑनेस्टली डिडक्ट 1 मार्क. नेगेटिव मार्किंग है ना स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट इट. -1 कर दीजिएगा. अदरवाइज गिव 5 मार्क्स मोर टू योरसेल्फ. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू क्विज. क्वेश्चन नंबर 5. इन pandas 1 library, a dash is a one-dimensional array containing a sequence of values of any data type. Series, data frame, matrix or stack. Is it data frame? Wrong. Is it series? So series was the correct option. First वाला correct था. 5 marks आपको इस क्वेश्चन के भी मिलते हैं. I hope अच्छे से आप लोग खेल रहे हैं क्विज को. Okay, next question. Question number 6. HTTP stands for Hypertext Transfer Procedure, Hypertext Transmission Procedure, High Temp Transmission Protocol,
hypertext transfer protocol. Okay, which one you want to try, students? This one? Wrong. Hypertext transfer procedure? Again wrong. Should I try this one? Hypertext transfer protocol? करेक्ट. आप सोचेंगे मैम सारे पहले क्वेश्चन सारे ऑप्शंस रॉन्ग ही चल रही हैं. ऐसा नहीं है, मैं भी क्विज खेल रही हूँ आपके साथ, ब्लाइंडली चल रही हूँ. देखते हैं एबीसी, कभी कोई ऑप्शन चला दिया, कभी कोई ऑप्शन चला दिया. ओके, चलिए करेक्ट है तो 5 मार्क्स, अदरवाइज -1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which function of matplotlib library is used to create line charts? Pie plot, draw, plot, bar. Okay, first से start करती हूँ. Okay, wrong. Draw, again wrong. Is it plot? Correct. Plot is the correct option. Okay, 5 marks. Next question. Question number 8. Unstructured data are sometimes described with the help of some other data called dash. आपका जो डेटा होता है अनस्ट्रक्चर, उसको हम किसी और की हेल्प से हम उसे डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? डेटा कॉलम और इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा और डेटा टेबल. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ फोर्थ ऑप्शन. ओके, आपने अपने माइंड में तो सोच लिया होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका. रॉन्ग. मेटा डेटा. Correct. Metadata is the correct answer. Okay, 5 marks for metadata. Let's continue the quiz. In total 15 are there, 18 we have attempted. Number 9. Which of the following is or are the computer malware? Spyware, keyloggers, ransomware or Trojan horses? आपको बताना है only fourth, that is only Trojan horses. Second and fourth, second is keylogger and fourth is Trojan horses, these two. Third है ऑप्शन आपका first, second, third, spyware, keyloggers and ransomware. या last one is all of these, means all four, spyware, keyloggers, ransomware, Trojan horses. Yes, कौन सा स्टार्ट करें हम? फोर्थ ही करते हैं, all of these. Let's try. Correct. All of these, ये तीनों ही malware हैं. Okay, fine. 5 marks for this also. Next question. Question number 10. Which of the following statements are not a part of data definition language? That is DDL. You must have studied DDL, DML, TCL and all. तो इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट DDL का पार्ट नहीं है? Is it create और alter और grant और drop? बताइए कौन सा ट्राई करें? Alter, wrong. Create, again wrong. Drop, again wrong. So last one is grant. Grant is the correct option. ये DDL नहीं है. This is transaction control language, TCL. Okay, 5 marks for grant option. Okay, otherwise -1. अपना स्कोर आप लोग लिख रहे होंगे या कैलकुलेट कर रहे होंगे इन माइंड. ओके, फाइन. लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 11. The correct order of SQL expression is select, where, group by, having. Select, having, where, group by. आपको सीक्वेंस बताना है. Select, having, group by, where. Select, group by, where, having. Yes students, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इतनी सारी आप क्वेरीज कर चुके हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाई हैं, बहुत सारे आपने सीक्वल की क्वेरीज की हैं इन 11th एंड 12th ऑल्सो. ओके, तो फर्स्ट वाला ही ट्राई कर लेते हैं इस बार. ओके, सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, देन हैविंग. करेक्ट, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. What is the worst and average case time complexity of the binary search? O n square, O1, O n log n, and last one is O log n. I will start with fourth option. Fourth वाला आपका correct answer था. Okay, 5 marks for this fourth option. Next question. Only 13, 14, 15, 3 are left. Which of the following is used to measure the variability? Mean, mode, median और range. ओके, स्टार्ट करते हैं. मीन से स्टार्ट करूं, ट्राई करना. ओके, मीन, रॉन्ग. मोड, oops. मीडियन, oops. नाउ द लास्ट वन इज रेंज.
Okay, next question, number 14, the second last question. Phishing is a term that is used in data management, data mining, data theft, or data warehousing. Which one is it? You want to try this one, data mining? Wrong. अगर आपने सोचा हो data theft, then you were correct. 5 marks for your thinking the correct option. Now let's move to the last question. Bluetooth is an example of LAN, MAN, WAN और PAN. सबकी full form आपको students आती होंगी ना? Okay, कौन सा start करें हम? WAN, no. MAN, no. ये भी नहीं लगता. LAN भी नहीं है. Then what is it? PAN, Personal Area Network. Try करते हैं. You are correct. तो लास्ट क्वेश्चन के आपके 5 मार्क्स ये भी मिल गए. कैलकुलेट योर स्कोर और मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा. नाउ क्विज इज बट स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द एंड. आपके लिए और भी वीडियोस में बना रही हूँ. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर CUT UG 2022. डू वॉच ऑल माय वीडियोस and do subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Wait for another video.